Welcome back, dear students. Dear students, let us study My Mother at 66. As you all of know that this poem, My Mother at 66, is composed by Kamla Das. In the last video, actually I shared with you certain very important bullet points related particularly to this poetess who is called the voice of woman sensibility. In this very particular poem, my dear learners, the poetess Kamla Das is sharing with us that bond a mother and daughter shares, or that relation a mother and daughter actually enjoy. And she also speaks volume particularly about the natural process of aging. How does one grow on and on and on in age? And how does this aging process bring so many changes in the life of the human beings? So let us start understanding each and every line of this beautiful poem of Kamla Das. Driving from my parents' home to Cochin last Friday. बता रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी कि वो अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी कहाँ को? कोचीन। लास्ट फ्राइडे यानी कि पिछले फ्राइडे को, क्या? मॉर्निंग टाइम में। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, कह रही कि आई सॉ मैंने देखा, माई मदर अपनी माँ को, बिसाइड मी मेरे बगल में। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ। doors, almost. Doors means you can say this, doors means asleep, you can say that. मतलब नींद में। open mouth, मुंह खुला हुआ। her face, उनका चेहरा। ashen like that of a corpse, उनका चेहरा एकदम ash, smoke जैसा, धुएं जैसा। like that of a corpse, corpse means dead body, जैसे एक जो है डेड बॉडी का, एक लाश का चेहरा होता है जिसमें कोई एनिमेशन, कोई एक्चुअली कोई शाइन नहीं होता है, कोई ग्लो नहीं होता, कोई चमक नहीं होती है, ठीक वैसा ही चेहरा। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और इन्होंने पेन के साथ क्या रियलाइज किया? दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और उन्होंने रियलाइज किया कि वो उतनी बूढ़ी थी जितनी वो बूढ़ी दिख रही थी। तो कह रहा है पोएट यहाँ पर एक्चुअली कि लास्ट फ्राइडे द पोएटिस Kamla Das was driving back to Cochin. She was going back to Cochin, and while she was going back to Cochin, particularly from the house of her own parents, she just got a chance to have a close look of the face of her own mother in the car. Why? Because just beside her, her mother was sitting in the car when she was driving back. She was driving back to Cochin. She says that when she looked at the face of her own mother, she found that the face of her mother had lost all the glow, all the animation, all the luster actually of the life, and her face was very similar to the face of the dead body. How does the actually face of the dead body look? Absolutely lifeless, absolutely without luster, absolutely without glow and animation of life. In the same manner, the face of her mother looked,
And the moment she had a close look of the face of her own mother, all of a sudden she got this realization that her mother had become old. And if she had become old, it means she was any time, any day, any moment going to die. And the poetess was going to be separated from her mother forever. तो कह रहा है कि कैसे जब वो एक जो है फ्राइडे की मॉर्निंग अपनी माँ के साथ उनके घर से, अपने पेरेंट्स के घर से वापस कोचीन जा रही थी, तो कार में बैठी, इनके बगल में इनकी माँ कार में बैठी हुई थी। और जब इन्होंने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इनकी माँ उतनी बूढ़ी थी जितनी बूढ़ी दिख रही थी, जितनी उनकी एज थी उतनी वो बूढ़ी थी, यानी कि उम्र के अकॉर्डिंग वो दिख रही थी। उन्होंने पाया कि उनके चेहरे पे कोई भी ग्लो नहीं बचा था और उनका चेहरा एक लाश के चेहरे जैसा था। आइए आगे देखते हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन कह रहे बट सून, तुरंत ही, पुट दैट थॉट अवे, उस जो है वो नेगेटिव थॉट, वो जो नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट इनके दिमाग में आ रहे थे, उसको दिमाग से निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, एंड लुक्ड आउट, इन्होंने जो है कार के विंडो से बाहर देखा, एट यंग ट्रीज, उन यंग ट्रीज को, वो नए पेड़ों को, स्प्रिंटिंग, जो क्या हो रहा था, दौड़ रहे थे। चूंकि कार दौड़ रही थी तो क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ दौड़ रहे हों। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग मीन्स कमिंग आउट इन अ रश, इन अ लार्ज नंबर, और इन्हें बच्चे दिखाई पड़े जो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर। मे बी दे वर coming out of their homes and heading straight particularly for the playground to play. तो यहाँ उन्होंने देखा जैसे, मतलब वो अपने नेगेटिव थॉट्स को निकालना चाहती थी, इसलिए उन्होंने खिड़की के बाहर देखा। खिड़की के बाहर जब उन्होंने देखा तो वो पेड़ जो है सड़क के किनारे लगे हुए थे, वो लग रहा जैसे उन्हें दौड़ रहे हों, क्योंकि उनकी जो है कार दौड़ रही थी। और वहाँ उन्होंने बच्चों को भी देखा। बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे अपने घरों से निकल रहे थे, कहाँ के लिए, प्ले ग्राउंड के लिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, जब ये एयरपोर्ट्स पहुँचती हैं, कहाँ पर, जहाँ से इन्हें फ़्लाइट लेनी है, कहाँ के लिए, एक्चुअली कोचीन के लिए, क्या होता है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, जहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक, यानी जो सिक्योरिटी चेक होता है, यानी कि जो फॉर्मेलिटीज़ की जाती है सबको चेक करने की, पैसेंजर्स को, उनके जो है लगेज को, ये सारी चीज़ें जब हो गई, अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी अपनी माँ से खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगैन एट हर wan, pale as a late winter moon and felt that old familiar ache means pain, my childhood fear. तो कह रही जब ये एयरपोर्ट पहुंचती हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी या जो सिक्योरिटी चेक होता है, उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उन फॉर्मेलिटीज़ के बाद जब वो फिर कुछ दूर अपनी माँ से खड़ी होती हैं, तो वहाँ वो अपनी माँ के चेहरे की तरफ एक बार फिर देखती हैं, और यहाँ उनका चेहरा फिर वैसा ही, वॉन, एब्सोल्युटली जस्ट विदाउट ग्लो और शाइन और एनिमेशन, पेल मीन्स एब्सोल्युटली येलो, फिर उनका चेहरा वैसे ही धुंधला सा, पीला सा, एज अ लेट विंटर्स मून, किसके समान, जैसे कि जाड़े के मौसम में जिस तरह एक चांद होता है, जिसके अंदर कोई भी चमक, जिसकी चमक बहुत ही धुंधली, बहुत सी फेंट और बहुत सी पेल हो जाती है, किसके कारण, फॉग के कारण, मिस्ट के कारण, ठीक वैसा ही इनकी माँ का चेहरा दिख रहा था।
और क्या हो रहा, जब उन्होंने देखा और इस सारी चीज़ों को महसूस किया तो कौन सा डर, वो बचपन का डर अपनी माँ को खोने का इनके पास वापस लौट आया। मीन्स जैसे बचपन में जब ये छोटी थी तो इन्हें कई बार ऐसा लगता था कि शी वॉज गोइंग टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम अ मदर, लेकिन वो डर क्या था, दैट वॉज द मोमेंट्री वन। बट ये कैसा डर था, ये एक परमानेंट सा था। क्यों? क्योंकि ये इन्हें रियलाइज़ हो रहा था कि अब इनकी माँ कभी भी मर सकती थी। कह रहा, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। कह रही, बट ऑल आई सेड, मैंने जो कुछ वहाँ बोला, क्या बोला सर, सी यू सून अम्मा, की अम्मा मैं आपसे फिर जल्दी मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। देखिए 3 बार वो यहाँ पे रिपीट करने कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाई, क्या करती रही, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो सिर्फ मैं मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। एंड वाई वॉज शी एक्चुअली स्माइलिंग? वॉज दैट नेचुरल स्माइल? वॉज दैट स्माइल एक्चुअली meant for her happiness, meant for her joy? No, that smile was only and only meant to hide her suffering, meant to hide that pain she felt. Why? Because she had this kind of a realization that any day, any moment she was going to get separated from her mother forever. So see, किस तरह से वो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे पोएटिस बहुत ही छोटी सी पोम में ब्यूटिफुली डिस्क्राइब कर रही है कि कैसे जब वो कोचीन को, अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन को जा रही थी और अपने पेरेंट्स के घर से पास के जो है एयरपोर्ट तक वो कार से गई। कार में जब वो बैठी तो उसने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा, और जब माँ के चेहरे की तरफ देखा तो उसे रियलाइज्ड हुआ दैट हर मदर हैड बिकम ओल्ड, सो ओल्ड दैट she got a kind of a feel that very soon her mother was going to die. She felt very sad and sorry. Why? Because she did not want to get separated from her mother. And no child wishes to be separated from his or her mother. So here the poetess, sitting in the car beside actually her mother, felt very sorry. Her heart bled. Or here, the heart of Kamla Das bleeds when she looks at the just pale, cheerless face of her own mother. But she wants to drive away that negative thought. Why? Because she does not want to give any room or any space to negative thought straightway into her heart and head. So she decides to give a change of thought, or she decides to think something, to think something about the positive thing. And in order to think something positive, what does she decide to do? She decides to look out at the young trees racing, or seen racing or running, just full of youth and full of warmth, full of life. And then she looks at the young shining faces of those young children, or the small children coming out of their own houses with a lot of glimmer and glow on their own face. And that glow and glimmer stand for life, stand for warmth, that she does not find in the face of her own, or on the face of her own mother. So how here she tries to just contrast
life and death. Contrast just joy and sorrow. On one hand, she paints the portrait of her mother, who is at 66 and has lost all the glamour, strength, and vitality of the life. On the other hand, paints the she paints those beautiful young trees and young children full of which full of life and animation and warmth. See, again, when this very particular poetess arrives at the airport from where she will have her own flight, particularly for Cochin, there she undergoes all the formalities of the checking at the checkpoints on the airport, and after all the formalities are done, again she finds herself looking at the face of her own mother, who is standing just a few yards away from her with that same pale face. Absolutely, her face looks like the just a moon in the winter with no glow, no animation, and no shine. Again, her childhood fear just what returns with all its intensity. Just as in her own childhood, she had certain moment when she felt that she was going to get separated from her own mother, and that thought of separation made her feel very small, made her cry. But that fear of the separation, that fear from the separation of her own mother, or fear from the separation of her own mother was that fear was for a short time. But the fear here she has got is a kind of a permanent fear. Why? Because now she knows that she is no longer a child. She understands what is death and how death takes one away actually from one's own dear one forever. So ये था हमारी डियर लर्नर इसका जो है पोम का एक्सप्लेनेशन. अब आइए इसमें एक बार हम फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच पोम में यूज़ है. देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर. यहाँ देखिए, I saw morning M, my M, mother M. यानी कि इस पोम की लाइन में हमें 3 याद की, ये भी इसी की लाइन है. यहाँ पे मी देखिए, इस पोम में 4 ऐसे वर्ड्स हैं जो किससे शुरू हो रहे हैं, M से शुरू हो रहे हैं. सो हियर वी फाइंड द रेपिटिशन ऑफ M साउंड at the beginning of 4 consecutive words, that is alliteration. So यहाँ पोम में alliteration यूज हुआ है. देखिए, doors, open, mouth, her face, ashen like that. यहाँ देखिए, her face ashen like that of her corpse. तो यहाँ देखिए कंपैरिजन किया जा रहा है. ये अपनी माँ के फेस को किसके चेहरे से कंपेयर करें, किसके फेस से, एक कॉप्स, एक डेड बॉडी के. तो यहाँ कंपैरिजन किसकी सहायता से हो रहा, लाइक जो है ये जो वर्ड है इसकी सहायता से हो रहा. तो मैंने आपको बताया है कि जब भी एक कंपैरिजन होता है लाइक का यूज़ करके, एज का यूज़ करके, सो दिस इज़ कॉल्ड मेटाफोर. तो सॉरी, दिस इज़ कॉल्ड सिमिली. तो यहाँ पे पोम में सिमिली यूज़ की जा रही है. नेक्स्ट देख लीजिए, और क्या है, पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट एक्चुअली अवे. तो देखिए, अवे एंड, तो देखिए दोनों ये जो अवे एंड दोनों वर्ड ए से शुरू हो रहे हैं, यानी कि फिर रेपिटिशन ऑफ अ सर्टेन साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज एलिटरेशन. तो फिर यहाँ पे देखिए एलिटरेशन यूज़ हुआ है. फिर यहाँ पे देखिए दैट टी से
थॉट टी से, दोनों वर्ड टी से फिर शुरू हो रहे हैं, तो अगेन एलिटरेशन। सो इस पोम की लाइन में एलिटरेशन यूज़ हुआ। यहाँ पर देखिए शी, फिर देखिए शी, यहाँ पे ये वर्ड रिपीट कर रहा तो रेपिटिशन हो गया। लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब देखिए यंग ट्रीज, ट्रीज को यंग कह रहा है, स्प्रिंटिंग कह रही है, यानी कि ट्रीज आर हियर पर्सोनिफाइड। यहाँ ट्रीज को पर्सोनिफाई कर रही हैं, तो क्या हो जा रहा है, पर्सोनिफिकेशन हो जा रहा है। आप देखिए स्प्रिंटिंग, द मेमोरी, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, स्पेलिंग देखिए आई का साउंड भी रिपीट हो रहा है, तो एसोनेंस हो जा रहा है। आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, देखिए आफ्टर एयरपोर्ट्स, फिर ए का साउंड जो है ए जो है लैटर से दो वर्ड शुरू हो रहे हैं, यानी कि फिर हमारे पास क्या मिला, एलिटरेशन। सिक्योरिटी चेक, a few yards away I looked again at her worn pale as late winter's moon। फिर देखिए यहाँ पे वो जो है अपने माँ के चेहरे को लेट विंटर मून यानी कि जाड़े के चांद से कंपेयर कर रही हैं, किसका यूज़ करके, एज वर्ड का यूज़ करके। तो फिर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जा रहा है, सिमिली हो जा रहा है। Felt that old familiar ache, my childhood, what my childhood, what fear, but all I said was see you soon। तो कि see soon दोनों एस से शुरू आने के, फिर एलिटरेशन अम्मा, and sorry all I did was smile and smile and smile। और लास्ट लाइन में वी हैव what is, we have repetition। why, because in the last line we have smile word repeated 3 times। That's it my dear learners in this video.